There's a barista in Bandra who has never acted a day in her life, who didn't know what Instagram was, and who said no the first time she was asked to be on camera. Today, strangers and Bollywood celebs alike walk into her cafe for a selfie with her. This is Suraksha, head barista at Mokai, and somehow accidentally one of Mumbai's most recognizable faces in the cafe world. We spent a day with her to figure out how that happened and what her life actually looks like beyond the gram. रील्स में थोड़ा सा मेरे को ऐसा रूड टाइप ऐसा स्ट्रिक्ट टाइप ऐसा है, पर एक्चुअल में मैं बहुत जॉली पर्सन हूँ, बहुत मस्ती करना, हंसते रहना, ये मेरे को पसंद है। तो वही फर्क है। The sassy queen that she plays, she's not even 5% of what she is showing on screen. How she is in person, she's a softie, literally a teddy bear. So Suraksha was the only person I interviewed from the whole team. So we have a team of almost 70-80 people now. And she was the only one that I personally took an interview of. I was Googling while sitting in front of her how to take an interview, and she was flawless. I started seeing a difference from other people and her. I felt like she really takes it as her own. We have a joke amongst ourselves where we call her the third owner. So, who is the real Suraksha? Let's find out. फिर जॉब ट्राई किया स्टार्टिंग में, तो लाइक 9 घंटे का ड्यूटी, इरिटेट टाइप जैसा जाना है, कंप्यूटर के सामने बैठना है और वो काम कर रहे हैं, निकलना है, तो अच्छा नहीं लग रहा था, वाइब नहीं आ रहा था। तो लाइक पहला मैकडॉनल्ड्स पे लगी, फिर मैकडॉनल्ड्स से धीरे धीरे फिर बरिस्ता का ही मुझे अच्छा लगने लगा। और फिर जॉब नहीं वाला नहीं मेरे लिए नहीं है, ये बरिस्ता ही अच्छा है मेरे लिए। तब बरिस्ता ही में कंटिन्यू किया फिर उसमें। Before she was a social media star, Suraksha was and still is the head barista at Mokai. And that job is a lot more than just making great coffee. तो सुबह लाइक मोस्टली ऑन मंडे टू फ्राइडे मेरा 12 o'clock का शिफ्ट रहता है। Okay. तो फिर 12 बजे आके फिर चेंज में रहती हूँ। फिर पहला स्टॉक्स देखते क्या क्या, जैसे कि माइलो हमारा इन हाउस है, तो लाइक कितना ट्रे है, फिर सब क्रीम्स हम लोग कुछ स्टाफ्स बनाते हैं, तो क्रीम्स कितना है वो टेस्टिंग करते हैं कि सब प्रॉपर है कि नहीं क्रीम, जो जितना भी क्रीम्स है। फिर डेजर्ट जो है माइलो का वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं, कैलिब्रेशन देखते मशीन का कि लाइक प्रॉपर है कि नहीं कैलिब्रेशन। फिर अगर ऊपर नीचे कुछ है फिर वो सेट करते हैं। पहले एक स्टाफ ब्रीफिंग कर लेते हैं, अगर सब लोग साथ में आए तो 3 बजे होता है, अगर 3 से नहीं तो मॉर्निंग वाले से मैं अलग बात करती हूँ और क्लोजिंग वाले से फिर अलग बात करती हूँ। तो अगर मॉर्निंग वाले को कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो उन लोगों के साथ बात करके फिर उनको आप ब्रेक्स निकालते हैं। And the drinks themselves? Well, that's a whole process too. वही इंस्टा से थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, फिर नहीं तो करीना मैम से थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है। और जैसे कस्टमर्स को क्या क्या पसंद है, मतलब अभी मोस्टली तो सब ऐसे हेल्थ कॉन्शियस टाइप है, तो शुगर फ्री और ऐसा मतलब हेल्थ के रिलेटेड ऐसा हम लोग ट्राई, तो वो हिसाब से एक आइडिया के हिसाब से ट्राई कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसको इसके साथ मिक्स करना है, ये ऐसा मिक्स करना है, फिर इतना ग्राम लेना है, सब मतलब पूरा सेट है। मेन्यू सेट रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक हम ये 100 डालेंगे तो कोई दूसरा 120 डालेगा, तो जो 100 है वो 100 ही डालेगा। ऐसा मतलब सब लोग सेम, मतलब आप जब भी आओगे आपको ऐसा नहीं लगेगा सुरक्षा के से अलग लग रहा है, तुम्हारे यहाँ से अलग लग रहा है, तो सब मेजर्ड है मतलब सब चीज। Now, here's where the story gets interesting, because on top of everything Suraksha does behind the counter, she's also the lead in Mokai's viral Instagram series, The Office at Mokai. When we were working on Mokai, there was just this one show that would be my comfort show, and I'd go back to watching it all day, was The Office. So I remember while I was watching, I would talk to my husband, who's also the co-founder of Mokai. I would tell him that, we have to make reels with the staff where they can come in together and we can use the same dialogues. Basically, the whole idea behind it was that normally people start with celebrities. We made our people celebrities. Rather than doing those same dialogues that they did in Office, we created a whole show based on the daily experiences that we have with our customers. And we had quite a bit of different personalities that we deal with on daily basis. Some absolutely beautiful personalities, some a little different to deal with. So like करीना मैम का वो सब कॉन्सेप्ट था कि लाइक उन्होंने पूछा कि लाइक मैं ऐसा रील बनाने का सोच रहे हैं, तो लाइक मैंने उनको बोला कि नहीं, मैंने कभी रील किया नहीं है, मुझे पता नहीं है शूट्स क्या होता है, इंस्टाग्राम भी इतना नहीं पता है मुझे। तो मैं बोली कि नहीं नहीं कर सकते। तो मैं बोला कि एक ट्राई स्टार्ट हम लोगों ने किया लंच केस में, तो वो स्टार्ट हुआ, फिर ऑफर्ड हो गया, मतलब
फ्लो में जा रहे हैं अभी. I remember the first few reels, I had to be very patient, whereas I'm very impatient. I was the one who had to write the scripts, and when she wouldn't do it the way I wanted it to be, I would lose my patience. But then with time, I realized that they are not actors. Even she improved, and even I improved. You know, some days, and there are a lot of English words used, and for them, even though they can speak English, those words are a bit too big. Sure. So I remember initially it was all English scripts, but she would just say it in Hindi, and I'd be like, you know what? Okay. Yeah. I mean, most brands I feel like run away from the fact that Hindi is used in their videos, and I see a lot of good brands not use Hindi. But I'm like, why? Like, you know, this is something that we converse in, it's something that they converse in. I don't want to run away from it. It's their conversation, so we keep it true to character. I remember the first day I came I didn't know what to do. Like I had no idea. I got the camera and I knew how to operate a camera. But I don't know if I could stop them from working and ask them to act and shit like that. And to manage the chaos of customers coming in, giving in their orders, them prepping their orders, and also making them act, that was a bit of an experience, a tough one, I would say. लाइक किरत जब फर्स्ट टाइम आए तो सेटिंग तो मेरे को समझता नहीं था कि लाइक कैसा बोलना है, किधर कैमरा पे दिखना है, मतलब वॉइस कैसा रहना चाहिए क्या. तो जब स्टार्टिंग में किरत है तो किरत का वो बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत टेक लेती थी, क्योंकि मेरे को इतना एक के साथ में पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकती हूँ मैं, मतलब आधा आधा ही बोल सकते हैं ऐसा. और बीच में हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, बीच में हम लोग हिंदी बोलते हैं. तो वो क्या किरत मुझे हमेशा ये बोलता था कि लाइक तू ऐसा बोल, ये फ्लो में बोल, ये मतलब पहले स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लगता ये शायद रूड है. हाँ, मतलब इसको क्या पता मैं जो कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम लगता था ना मुझे, तो मेरा वो ऐसा मुझे लगता था कि शायद तक इसको गुस्सा आ रहा है मेरा कि कितना टाइम ले रही है ये. तो फिर बाद अभी तो वो उनको पता चला मेरे नेचर कि मैं कैसी हूँ. तो लाइक अभी जो ऐसा मुझे ऐसा होता है कि ये डायलॉग मेरे से नहीं हो रहा है, तो वो मेरे लिए सेंटेंस ये कर देते हैं, तुम्हारे लिए ये इजी वे, तुम ये बोल दो, तुम फिर ये बोलो. तो फिर हाँ वो फिर हो जाता है, वो भी मेरे फ्लो में आ गए, इनको पता चला मैं कैसी हूँ, तो वो मेरे को फिर सेंटेंस दे देते तो फिर इजी हो जाता है. So initially, I remember when our videos started getting a little more experimental. At that time, we were worried because we could also get a backlash. Yeah. So at that time, I was concerned when people would come in, would they look at her the same way? But things changed. There are people commenting that if Suraksha is not there, we don't want to come. There are people coming in and taking pictures just with her, and they are literally like, "Ma'am, can I please take a picture with you?" And just seeing that move. When we started, I've seen people really treat servers incorrectly and from a very rude aspect. So even though I would go into the picture and there were times where I would have to draw a line, you know, sometimes you can't do that. Sometimes hospitality is keeping a smile on your face. So even if someone is rude, you just need to keep a smile. It doesn't matter. So when I saw that shift happen, where they started respecting, and not just Suraksha, with everyone I saw that change, even though they are not a part of it, everyone, because people here feel like they know those people. So that familiarity is there, where that mood sort of switches. So ever since we started this series, we've dealt with lesser hate and more love. What makes Mokai's efforts stand out in a crowded social landscape is the fact that the series portrays and parodies the quintessential Bandra cafe, with crazy coffee creations and even crazier characters. And that Suraksha is at the center of it all is just the icing on the coffee cake. मेरा बेटा ने जब फर्स्ट टाइम मेरा रीडिंग होता है, ये काय करते है तू तू खुद ही सगळं करायला लागली. म्हणजे वो तो मतलब इंस्टा ने अपनी यूट्यूब ज्यादा देखता है, तर वो मुझे हे काय करतेस, म्हणजे अलग ही उसका रिएक्शन था, हे काय करते. फिर वो भी एक रील में आया उधर, तो वो भी एकदम मतलब तू कर रही तो फिर मुझे भी करना ही है. अभी वो भी मतलब एक्साइटेड रहता है कि लाइक हाँ संडे को, मतलब हम लोग हर संडे डालते हैं या सैटरडे डालते हैं, तो वो इंस्टा पे जाता है, देखता है कितना लाइक्स आया है, कितना ये हुआ है. Suraksha's role at Mocha is very unique. It's quite unlike any other service professional because she's not just making the drinks and making coffee. She's also coming up with ideas on the spot for new trendy drinks. She's also coming up with ideas and making notes of like any interesting customers that come in that could possibly be turned into an episode. And she's like this kind of mama bear of Mocha. So she's providing that sort of extra help to people on the team. She plays
like multiple roles very seamlessly, and I don't think people realize that about her, because what you see on social media is like this very one-dimensional sassy queen, but what she actually is someone who is extremely integral to the running of Mokai. So it's been a really fun day following Suraksha around and seeing her be the sassy queen of caffeine. So I just want to say cheers to Suraksha and cheers to Mokai. Up next on At Your Service is the man behind the bar at two of the most cutting-edge restaurants in Mumbai at the moment, Govind from Americano and Otra.